It is hot. It is humid. It is a sweltering summer in West Bengal. The long drawn-out 8-phase assembly election is a challenge for everyone involved, from the stakeholders in the state to the consumers of news all around the world. Highly charged, highly polarized, the ruling Trinamool Congress has been mightily challenged by the party that claims to be the world's largest political party, the BJP. The BJP got their hopes up after the 2019 Lok Sabha elections. They got 40.64% of the votes and 18 of the possible 42 seats. After a decade of TMC rule in West Bengal, the left front and the Congress stand decimated. While the big two, the BJP and the TMC, are seen fighting for majority in West Bengal Assembly, the once significant others are fighting for continuity. They have to show some gains if they want to be a factor. Not in 2021, but maybe the next time, or the elections after that. 2021 will be a landmark year, not just for the TMC and the BJP in West Bengal, but for all the other forces in that electoral space. The battle for 2021 in West Bengal has been loud, exciting, colourful and a fight till the very end. It was exactly 10 years back that Mamata Banerjee's slogan of Poriborton changed the very landscape of the West Bengal politics. It ushered in the fall of the 3-decade-long left rule, and it also started the saga of left's crisis, its fight for survival and its erstwhile bastion. The old guards in the left this time have infused new blood, brought in new leadership in a desperate bid to revive its fortunes in West Bengal. In 2008, when the Tatars shifted their nano plant from Shingur, Srijan Bhattacharya was 13 years old with barely any idea about politics. 14 years down the line, the 27-year-old has the big task of regaining lost ground in what many call the CPM's Waterloo, Shingur. The former SFI Bengal State Secretary is taking on Becharam Manna, a two-time TMC MLA and a key figure in Mamata Banerjee's Shingur movement. As Bhattacharya canvasses through the narrow bylanes of Shingur, a keen interest in the young candidate is palpable. হাসিটাই খুব সুন্দর, আমরা তো হাসিতেই ভোট দিয়ে দেব। হাসিতেই ফি দাও, হাসিতেই ওর ফি দাও আমরা। Facebook is good, but Facebook is not an alternative to face-to-face campaign. So I am also concentrating on door-to-door campaign, and this is Shingur. I am going to the people and I am telling them honestly that look, we have been defeated in the last few elections in Shingur, but we have not shifted from what was our original standpoint. Barely 25 kilometers from Shingur, Srijan's fellow comrade, Deepshita Dhar, a PhD scholar from JNU, calls it a leap of faith from campus politics to the grind of real politics in Bengal. It is our moral responsibility to come down and change the politics here. There are so many young people in our country, and for the last couple of years, the problem of the student and youth had been in the forefront. And we thought the people who are leading all those movements for education, for jobs, these people need to be given a chance. In the 2021 elections, the left front has launched its Young Turks to hold on to what is left of its one-time fortress. Apart from Deepshita and Srijan, the CPIM has fielded more than half a dozen young candidates, while the left support from leaders to cadre has become an open poaching ground for the BJP and the TMC. Old party hands like the 64-year-old Soumitra Chakraborty hope that the strength of its ideology will win back the left support base. वोटर व एकदम लोअर लेवल में कुछ वर्कर लोग बीजेपी में गया है। इसका कारण उन लोग का ऊपर जैसे इलाका तरफ से उन लोग को ऊपर अटैक किया है तृणमूल वाला लोग,
कुछ आदमी सोचा है कम से कम तृणमूल को अभी टाइट देने के लिए बीजेपी को साथ देने चाहिए। कुछ आदमी का साइकोलॉजी ऐसी कुछ हुआ था। वोट में क्या होता है वो बात अलग है। पब्लिक का अंदर में अभी भी रिस्पेक्ट है, अभी भी रिस्पेक्ट है। तृणमूल और बीजेपी जो हम लोग को मेन ये कर रहा है, आप लोग को मीडिया वाला जितना भी हाइप करे, किंतु पब्लिक के अंदर में अभी भी ये है जो लेफ्ट का अलग एक तो रिस्पेक्ट है। Relegated to an inconsequential spot in the current political narrative, the once mighty left front is desperately seeking validation among the masses. Working hard to remain a politically viable force, the left front knows that their performance in 2021 may be crucial if neither the TMC nor the BJP can muster majority on their own. The left front, which ruled the West Bengal for 34 years, is trying to infuse young blood to revive its old days. In the past 1 decade, a lot of the workers, the cadres of the left front has left the party, which was their own strength. Now, what we have seen is that not only leaders, but also its deep-rooted cadres have deserted the grand old left front. As the 2021 election dates started getting closer, the two main challengers, the Trinamool Congress and the BJP, began fishing for strong candidates from within the supposedly decimated left front in West Bengal. And there were leaders who were ready to not just switch parties, but jump ideologies as well. Left leaders like Khoghen Murmu, Taposhi Mondol, Shankar Ghosh and Rinku Noshkar joined the BJP over the past few months. Not only the leaders, but the left cadre too moved away from the party, swinging from the left to the right of the ideological scale. देखिए जो लोग अभी खड़ा हुआ है वो लोग भी बीजेपी में आएगा। 40-year-old Raju Sarkar, after having left the left, of which he was a foot soldier for 23 years, now devotes himself full-time to building ground support for the Bharatiya Janata Party. जो यंग जनरेशन था वो यंग जनरेशन को सामने धकेल दिया और बोला तुम लड़ो, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और बोला तुम लड़ो, ये पूंजीवाद के खिलाफ लड़ो, ये तृणमूल के खिलाफ लड़ो, ये मोदी के खिलाफ लड़ो, और हम लोग पीछे हैं। लेकिन अगर मान के चलिए कोई भी युवा पीढ़िया का किसी को भी पढ़ाई लिखाई करने के लिए 2-4 पैसा लगेगा तो ये लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, ये लोग आम आदमी से चंदा इकट्ठा करते हैं। कोई किसी को चोट पहुंचा जुलूस में जाके तो उनके लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए बिल कूपन भेज देते हैं। क्यों? जब आप बिल कूपन आप आम आदमी से बिल कूपन का पैसा आप वसूलेंगे तब इस बिल कूपन के 25% पूरा जाएगा जिला में, 25% जाएगा सेंट्रल में और 10% जाएगा राज्यों में, और उसके बाद जो 15% रहता है वो जाके खर्चा होगा जो पीड़ित है उसके हिसाब में। कभी आप देखें कि लेफ्ट का कोई पार्टी ऑफिस में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस और ऋषि अरविंदो, आपका स्वामी विवेकानंद, ठाकुर श्री रामकृष्ण देव, विद्यासागर, किसी का भी फोटो कोई पार्टी ऑफिस में है? किसी का भी फोटो नहीं है। फोटो है तो उसका मार्क्स का है, लेनिन का है, स्टालिन का है, एंगेल्स का है, चे गुएवारा का है। सिविलाइजेशनটা কিন্তু এই হিন্দুত্বের মধ্যেই আছে। A practicing Calcutta High Court advocate, Chirantan Daw, joined the BJP in 2013. In his youth, he was a card-carrying member of the leftist RSP. He now believes that saffron can cure West Bengal of its TMC fixation. लेफ्ट चाहता था कि सीपीएम छोड़ के कोई नहीं रहे, सब सिर्फ सीपीएम ही रहे। ये लेफ्ट फ्रंट में भी आप लेफ्ट फ्रंट में हम तो आरएसपी का साथ जुड़ा हुआ था, तो हमको जहाँ पे करना संगठन बनाना था वहाँ पे हम कांग्रेस, तृणमूल एवं ज़्यादा से ज़्यादा सीपीएम से लड़ाई करके संगठन बनाना था। वो चाहते थे लेफ्ट में एक ही पार्टी रहेगा, वो सीपीएम, सीपीआईएम, और कुछ नहीं रहेगा। ये एक तरीका है छोटा छोटा
को ग्रास करने का। मेरा पिताजी अनुशीलन समिति का सदस्य था, हाँ, तो वहाँ से उन्होंने ज्वाइन किया, जेल से छूटने का बाद उन्होंने ज्वाइन किया आरएसपी में। तो और मैं जन्म से देख रहा हूँ मेरे घर में आरएसपी का लीडर लोग आता है जाता है, तो उससे और मेरा पिताजी को भी देखा था, तो उन हिसाब से हम देखा जे अभी करना है तो ऐसा ही करना है। Not just the Saffron Party, but the lure of TMC also beckons the red workers of old. 56-year-old MD Jasimuddin joined the Trinamool in 2015 and managed to hold on to his Kolkata municipal ward that he had won on a CPIM ticket in 2010. सरकार की और पार्टी की दोनों की सुप्रीमो है ममता बनर्जी। एट ए टाइम आप देखेंगे वो डबल रोल प्ले कर रही हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल के लोगों का विकास कर रही हैं, पश्चिम बंगाल का विकास कर रही हैं। आप अगर अचीवमेंट के द्वारा देखेंगे कि आज भारतवर्ष में हम एक एग्जाम्पल खाली आपको देंगे कि जहां 6 वर्षों में बेकारी दर, भारतवर्ष का बेकारी दर 30% कम हुआ है, पश्चिम बंगाल में 45% जो है बेकारी दूर हुआ है। If you look at the CA or NRC movement, now all the left leaders are talking about Gandhi, they are singing Raghupati Raghava Raja Ram. But for the last 40 years, you constantly blamed Gandhi. So your entire refugee vote bank, if you look from the 1992 after the Babri thing happened, even when Tapan Sikdar won the election, they were shifting or they were inclining towards BJP because they were thinking that this is a better alternative. Left could not give them, actually it's an ideal bankruptcy that left could not teach them, could not idealize them in the proper secular line. So the Hindu refugees, they thought this is a nice chance to join the Saffron Brigade. Most significant aspects that will decide the electoral results of the 2021 elections in West Bengal is where the Muslim population votes. West Bengal has nearly a 30% Muslim population, which will play a key factor in the elections. Till 2011, it was considered that the Muslim population was supporting the left front and eventually moved to the Trinamool Congress. In 2016's West Bengal elections, Trinamool Congress, which won 211 seats, of which 98 were from Muslim-dominated areas. In an election which is being termed as an extremely polarized election, what will be significant is to see where the Muslim population votes. The inordinately stretched out 8-phase West Bengal Assembly elections in 2021 has seen intense polarized campaigning, and one of the biggest other factors to influence the results would be the Muslim voter, and for a valid statistical reason too. In about 94 of the total 294 seats, the Muslim vote is a sizable 33% points, and out of those, in around 47 constituencies, the Muslim vote adds up to a majority. And over the past decade or so, the Muslim vote in West Bengal has consolidated in favor of the TMC. The 2014 general elections, the 2016 assembly polls, and then again the 2019 general elections that reinforced the trend. So in a bid to consolidate the non-Muslim votes under one symbol, the Bharatiya Janata Party ran its 2021 campaign, drumming up the bogey of Muslim appeasement. सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बटने मत दो. The significance of this significant other made the Trinamool Congress chief urge the Muslims to vote en bloc for her party. যদি আমার কোনো মাওবাদী বন্ধু থাকেন, যদি আমার কোনো বামপন্থী বন্ধু থাকেন, যদি আমার কোনো কংগ্রেসি বন্ধু থাকেন, তাদের উদ্দেশ্যও বলবো সিপিএম কে ভোট দিয়ে ভোটটা নষ্ট করবেন না। বাংলায় ওরা বিজেপির গদাই। কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে ভোটটা নষ্ট করবেন না, ওরা বিজেপির জগাই। আর বিজেপিকে ভোট দেবেন না, ওটা হচ্ছে দাঙ্গাকারী মাধাই।
The question is, has the Muslim voter in West Bengal paid heed to Mamata Banerjee's request? Or have they considered the other option that has been offered in 2021? Abbas Siddiqui is one of the others in this fight for West Bengal. Popular among Bengali-speaking Muslims, Siddiqui and his Indian Secular Front has gone out and challenged the TMC's hold over the Muslim vote in the state. I mean, look, for the last 10 years, all the left leaders have accused Mamata for the appeasement politics. That was the only main allegation in Mamata. But what they have done, Mamata had only gone for a namaz for the Eid day or for a iftar. But you have joined hand with the clergy. What is the credential of Abbas Siddiqui? Have you ever heard that he has done any social work? Have you ever heard that he is doing any great thing? Rather, abusing the Muslim woman or any woman for their dress code, for their food habits. So, I mean, what is the credential of Abbas Siddiqui and how you can join hand? It is the same thing, the same mistakes like MIM. What MIM has done in Bihar, Abbas Siddiqui is just trying to do the same in Bengal, cutting Mamata's Muslim vote and actually favoring BJP. Political commentators see a rattled TMC. They say that to prevent polarization and counter-polarization, the TMC has fielded fewer Muslim candidates this time compared to 2016. When you are trying to face BJP, you have to assume there's no point in complaining after the result that, oh, polarization ho gaya. They have used Hindu-Muslim card to win. You have to account for this, knowing that, yes, they will do it, and then prepare your strategy accordingly. That's what I've been saying all along, that yes, we are aware that it is a possibility that many or a bigger chunk of the Hindu majority might vote for BJP, and we have to be prepared for that. While the BJP strategizes to pull in the Hindu voters, it is the Muslim factor which might give the much needed leg up for Mamata Banerjee. Seats with a strong Muslim presence are spread out mainly over the districts of Howrah, Birbhum, Murshidabad, North 24 Parganas and South 24 Parganas. And this is where the answer to the question of how the others will vote actually lie. Now, away from the noise of this heavily polarized campaign in West Bengal, we've come to one of the more congested localities of central Kolkata. And like in many other cities, Hindus and Muslims here have lived cheek by jowl and have certainly worked in a common neighborhood. How is this election campaign, though, changing the views of Hindus and Muslims towards each other? Let's try and find out. क्या नाम है आपका? गोविंद जी। गोविंद जी, आपका नाम? मोहम्मद निसार अहमद। अच्छा, मोहम्मद निसार अहमद, गोविंद शर्मा, इसी एरिया में काम करते हैं क्या? हम लोग यहीं नहीं, हम लोग यहीं रहते हैं। आप भी यही रहते हैं, आप भी यही रहते हैं। अब देखिए, चुनाव आ गया है और चुनाव में हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, जय श्री राम की। क्या कहते हैं? क्या हिंदू यहाँ एकजुट है? आप लोग हिंदू मुसलमान का बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ हिंदू मुसलमान का बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दंगा फसाद कुछ नहीं, ऐसा कुछ बात है। तो कोई जीतेगा? अगर बीजेपी जीते, टीएमसी जीते या कांग्रेस लेफ्ट जीते, यहाँ कोई बदलेगा क्या? यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं होगा। यहाँ के लोग एकजुट रहते हैं। आप हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से काम करवाते हैं। होता है, ये होता है, दिवाली होता है, सब होता है। हाँ, यहाँ दिवाली भी आप बनाते हैं। दिवाली बनाते हैं। तो यहाँ मंदिर है और वहाँ मस्जिद है। जय श्री राम किस तरह से देखते हैं? अगर भाजपा की सरकार आती है बंगाल में, तो क्या आपको लगता है कुछ फर्क होगा या हिंदू मुस्लिम भाई भाई तब भी रहेगा? नहीं, अगर भाजपा की सरकार आएगी तो एकदम फर्क होगा। एकदम फर्क होगा, क्योंकि यहाँ तो यही है कि जय श्री राम। देखिए, राम को तो हम लोग भी सम्मान करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम उनको सम्मान नहीं करते हैं। हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि जो दूसरे भगवान की इज्जत नहीं करता वो हमारे भगवान का नहीं है। तो हम तो दूसरे के भगवान को भी इज्जत करते हैं, हमारा कुरान तो यही कहता है। लेकिन अब ये है कि अगर बीजेपी आती है तो झमेला होगा। आपका नाम क्या है? राजेश। राजेश, ये बताइए कि आपको लगता है जय श्री राम का जो नारा जो लग रहा है इस चुनाव में, उससे क्या सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा या हिंदू मुस्लिम भाईचारा है कोलकाता में? ना, वो सांप्रदायिक बढ़ जाएगा, सद्भावना ही रहेगा। आपको लगता है रह जाएगा? वो देखिए, पॉलिटिकल इशू कुछ रहते हैं, हर पार्टी के रहते हैं। हाँ। वो अपना अपना उन लोगों का फंडा है।
लेकिन जो सांप्रदायिक एकता वो यहाँ का बना रहेगा। नेताओं के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके जरिए। नफरत बुरी है, न पालो इसे। नफरत बुरी है, न पालो इसे। दिलों में खलीस है, निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये हम सब का हिंदुस्तान है, संभालो इसे। टाइगर दिल खुश कर दिया टाइगर। Come 2nd May, it would be clear as to what kind of role these other fronts and political parties have played in the Bengal poll fray. While political pundits have had little hope on their fortunes in these elections, there are others who believe that they might actually be the kingmakers in the end. That is all that we have on this special show. For other news and updates, keep watching India Today. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.